Hello, boys. Good morning. First of all, do you have any idea what is economics? I will give you an idea. So you will get an idea now. Beta, earlier in England, I am saying this England because there was no Britain that time. There was only England. Earlier in England, there was a physician. बेटा फिजिशियन किसे बोलते हैं? डॉक्टर को फिजिशियन बोला जाता है. देयर वॉज ए डॉक्टर फिजिशियन. उनका नाम था प्रोफेसर एडम स्मिथ या डॉक्टर एडम स्मिथ, फिजिशियन एडम स्मिथ. उन्होंने एक किताब लिखा. ही हैज रिटन ए बुक. द नेम ऑफ द बुक इज वेल्थ ऑफ द नेशन. नाम क्या था बुक का? Wealth of the Nation. In that book, he has written a line that is, economics is nothing but the study of a wealth of a nation. क्या लिखा था उन्होंने? What he has written there? He has written there, economics is the study of the wealth of the nation. That was the first time a subject has grown, the born of a new subject. पहली बार एक नया सब्जेक्ट बना. What was that time economics is being called? Adam Smith was regarded as the father of economics. कौन है father of economics? Adam Smith. He has given a definition. क्या नाम है उस definition का? Wealth definition. हम नामकरण करते हैं डेफिनेशन, क्योंकि विद द जनरेशन पासिंग बाय पासिंग द इकोनॉमिक्स डेफिनेशन इज गेटिंग चेंज्ड. सो द एडम स्मिथ गेव वेल्थ डेफिनेशन. ही हैज मेंशन्ड इन हिज बुक दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए वेल्थ ऑफ ए नेशन. एक देश के, एक नेशन के वेल्थ को स्टडी करने का जो प्रोसेस है, वी कॉल दैट एज द इकोनॉमिक्स. एडम स्मिथ ने एक नया सब्जेक्ट को स्टार्ट किया. ए न्यू सब्जेक्ट हैज बॉर्न, ए न्यू सब्जेक्ट हैज ग्रोन अप, दैट इज इकोनॉमिक्स. ईयर्स पास्ड बाय, सालों बीत गए. उसके बाद सब्जेक्ट पे चर्चा होता गया, इकोनॉमिक्स आगे बढ़ता गया. एक आदमी सामने आया. उन्होंने कहा कि ही हैज ओनली मेंशन्ड दैट the definition given by Adam Smith is not correct. That is not economics. Only study of a wealth of a nation, we could not regard that as economics. बस इकोनॉमिक्स क्या एक देश का वेल्थ को स्टडी करना इकोनॉमिक्स है? ना बेटा, ना बेटा. मार्शल साहब ऐसा नहीं बोलते थे. द नेक्स्ट मैन, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. पहले तो बता दी ये थे कौन. He was a professor in a renowned college in Ireland. Later on, he has shifted his base to the Oxford, Cambridge. वो एक प्रोफेसर थे, पढ़ा लिखा आदमी थे. Rather, he was a professor of social science. अच्छा, let me tell you, economics is a combination of science and arts. Rather, we can say it's also a combination of social science. तो ये कोई साइंस नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस पे बेस्ड होंगे. इट इज़ नॉट आर्ट दैट यू हैव बीन गिवन ए पोएटिक लाइसेंस. इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. हाउ इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ नो टू ड्राइव? बाइक चलाना आता है? बहुतों को आता होगा भाई, आप लोग तो हीरो है. माई बॉयज आर हीरोज. अच्छा, व्हेन यू ड्राइव, when you drive a bike, when you ride a bike, actually I should say that. अच्छा, बाइक स्टार्ट करते हैं, there is a rule कि either we have to make a self start or we have to kick up the bike and start the engine, ignite the engine. फिर आप गाड़ी चलाते हो, slowly hold the clutch, put gear, स्लोली रिमूव द क्लच, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर को
बढ़ाना है, यही है ना मैकेनिज्म गाड़ी चलाने का। अच्छा बेटा मुझे एक बात बता, एवरी वन ऑफ अस फॉलो द सेम मैकेनिज्म, यू, मी, पड़ोसी, एवरी वन वी फॉलो द सेम मैकेनिज्म। फिर भी तुम बाइक चलाते हो कैसे? मेरा बाइक चलता है डुक 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 डुक। देयर इज डिफरेंस, वी आर नॉट सेम ब्रो। द पॉइंट इज, though we follow the same mechanism, but still we drive differently. Means the mechanism is the science, mechanism is the science। बेटा साइंस क्या है? क्लच पकड़ना है, गियर मारना है, एक्सीलेटर आगे बढ़ाना है, ये साइंस है। अब कोई तेज चलाता है, कोई धीरे चलाता है, दैट इज आर्ट। सेम कंडीशन है। Economics is, there are some rules that everyone has to follow. Sorry. There are some rules that everyone has to follow. But regardless of that rules, we make it work differently. Though there are rules, but regardless of the rules, we make it work differently. Yes or no? So that's the effect, that is combination of science and arts. I was talking about Marshall, Professor Alfred Marshall. Marshall साहब बोलते हैं कि ना, it is not only, अच्छा ignore the train sound, my house is very much nearer to the, though it's a lockdown, कभी कभार एक आधा ट्रेन चला जा रहा है। अच्छा let me tell you, Marshall sir, he said Adam Smith definition is not correct. Marshall बोलते हैं ना बेटा, economics is not only about study of a wealth of a nation, rather it is something else. What Marshall says? Marshall says no, it's not wealth, rather it's welfare. Marshall says it's not wealth, rather it is welfare. That is the main impact we have to be given. The word mentioned here is the material welfare. What's the word mentioned here? The word mentioned here is the material welfare. Material beta, material अंग्रेजी में बहुत मीनिंग है, there are too much. Here the material means important. Here the word material means important. So what the material welfare talks about? The material welfare talks about is that we have to focus on the welfare or well-being of the society. We have to focus on the welfare or the well-being of the society. That's the simple thing regarding the Marshall's definition. That's all about the Marshall's definition. That is, Professor Alfred Marshall says economics is not about wealth, rather it is all about the welfare, material welfare. क्या मार्शल साहब सब तरह से सही थे? ना। फिर 50 साल और बीत गए, 50 years passed, एक नए बंदे आए, नाम है उनका लॉर्नेल रॉबिन्स। So who was the first guy to give a definition? Adam Smith. वो थे मेरे father of economics. Adam Smith के बाद दूसरा कौन आए थे? Who was the second person to define the subject economics? Is that Professor Alfred Marshall. मार्शल साहब को हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। मार्शल साहब 2 साल तक रहेंगे अपने साथ। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज दिए हैं। वी ऑल हैव टू लर्न। Come to class 12, the demand supply, everything is given by Professor Alfred Marshall only. So Marshall साहब से यहाँ छुटकारा नहीं मिलेगा। First one was the Adam Smith, second one was the Professor Alfred Marshall, third one Professor Lionel Robbins. रॉबिन्स साहब कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट study of wealth or material welfare, rather it indicates something more.
it indicates something more relevant to the society. Lionel Robbins says, economics is the combination of ends and squares. Economics is the combination of ends and squares. Means, with your scarce resources, you have to fulfill your unlimited wants. What does Robbins says? What does Professor Lionel Robbins conduct about economics? Professor Lionel Robbins conduct about economics is that economics is the combination of ends and squares. What is the combination of ends and squares? It is like with your limited resources, you have to fulfill your unlimited wants. एडम स्मिथ के डेफिनेशन का नाम था वेल्थ डेफिनेशन. मार्शल साहब का डेफिनेशन का नाम था वेलफेयर डेफिनेशन. रॉबिन साहब का डेफिनेशन का नाम है स्केरसिटी डेफिनेशन. मॉडर्न इकोनॉमिक्स आते आते रॉबिन्स डेफिनेशन वाज रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स एंड्स और स्केयर्स को एक साथ कंबाइन करना ही है. चैप्टर 2 में आपको इसी के बारे में बात करेंगे कि ये एंड्स क्या है, ये स्केयर्स क्या है. मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे के जाता हूँ आज. अच्छा, मुझे बताइए कि सपोज आपको घर से 100 रुपया दिया जाता है. You have been given 100 rupees from your home. अच्छा, now tell me, what you will do with that 100 rupees? मैं अभी यहाँ मैं अकेला हूँ, so I will talking about myself only. Suppose I have been given with 100 rupees. First of all, I will go and buy some chocolates. फिर बाहर जाके I will have some fuchkas. अच्छा, let me tell you one thing. खुश हो जाओगे? मतलब will it be enough? How can it be enough? अरे 100 से बड़े 200, 200 से बड़े 2000, कितना भी दो बेटा कम है. मीन्स योर वांट इज अनलिमिटेड. योर वांट इज अनलिमिटेड. भाई मेरा वांट तो अनलिमिटेड वांट है. मैं चाहता हूँ मेरा न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस हो, पेरिस में एक घर हो, एम्स्टरडेम में एक रेस्टोरेंट्स हो, कैफे हो. अरे बेटा वांट का तो कोई कमी है नहीं, साला पैसा ही तो नहीं है. We are having unlimited of the wants, but with the limited or scarce resources. We are having unlimited wants, but resources we are having is very much limited. Resources. Now here I am talking about resources, the monetary resources. Robbins says, with your limited resources, the fulfillment of your unlimited want is regarded as economics. That's Professor Robbins' definition. Till the start of modern economics, till the modern economics has started, Robbins' definition was regarded one of the best. But ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुका है. Another 80 years passed. One more person came. Professor Samuelson, Samuelson. Professor Samuelson. Adam Smith was regarded as the father of economics. Then Samuelson sir is regarded as the father of modern economics. Repeat it again. Adam Smith is regarded as the father of economics. Professor Samuelson is regarded as the father of modern economics. Modern economics came to existence. Now you know the story. There are 2 Nobel Prize winner economists from India. From Calcutta. Professor Amartya Sen, he has won the economics for his work in the poverty alleviation program. Don't worry. In class 11 only you will understand what
Professor Amartya Sen has did in economics. And Avijit Vinayak Banerjee, the economics Nobel Prize winner this year, he has written a book named Poor Economics. भविष्य में मिलेंगे तो आपको वो बुक मैं पढ़ने दूंगा. नथिंग वेरी टफ लैंग्वेज, यू कैन रीड, यू कैन अंडरस्टैंड. अब आप मैदान में आ गए हैं तो सीखना तो पड़ेगा बेटा, सीखना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, बढ़ना भी पड़ेगा. गॉट इट? So Professor Samuelson, regarded as the father of modern economics, he has given growth definition in the economics. उनका कहना है ये सब वेल्थ, वेलफेयर, स्केयर सब चलता रहेगा, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट ग्रोथ होना चाहिए. दैट्स द मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स. मॉडर्न इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द प्रोफेसर सैमुएल्सन्स growth definition. So chronologically, number 1 Adam Smith, 2 Marshall, 3 Samuelson, 4th number 1 Adam Smith, number 2 Marshall, number 3 Robbins. Adam Smith gave the wealth definition, Marshall welfare, material welfare rather I should be specified. Number 3 Lionel Robbins, scarcity definition. 4th, the father of modern economics, Professor Samuelson, growth definition. I am clear? So, this much now for today. We will meet up in the next week. From till that, myself, your group admin, Orko Chatterjee, your economics teacher, and your group admin. Any problem, anywhere, anything to ask. Maybe you think that it's a silly question. Doesn't matter. All silly questions combine to become a big questions. Any problem, anything you are facing, please comment on the video. Comment. Please comment on the video only. I can look up, I can clarify, or you can ping me on WhatsApp, no issues. But please comment anything. You like me, you dislike me, love me, hate me, no matter. Don't ignore me. Comment on the video. This is Orko Chatterjee, your group admin, your economics teacher, signing off for this week. Meet you again. Thank you. Stay safe, stay healthy, stay at home. Thank you.